ओके फाईन. चला सगळ्यांनी चॅट बॉक्समध्ये अटेंडन्स लिहा. एव्हरीवन प्लीज राईट युअर अटेंडन्स इन द चॅट बॉक्स. आयुष चॅट बॉक्समध्ये नाव लिहायचे. ठीक आहे. अजून काही स्टुडंट्स जॉईन नाही केलेत बहुतेक. बरोबर ना. जस्ट वेट, मी एक मेसेज टाकतो ग्रुपवरती. जस्ट अ मिनिट स्टुडंट्स. ओके गुड. तर ठीक आहे, आय गेस माझा आवाज सगळ्यांना येतोय. ओके, आणि आपण आता सुरू करूयात. चला सगळ्यांनी यस लिहायचंय. आयुष, आवाज येतोय आयुष? ठीक आहे. So in the last lecture, yeah, good. So in the last lecture, we have seen three equations of motion, right? So I hope कि तुम्हारा सगळ्यांना हे इक्वेशंस पाठ आहेत. आप सब लोगों को ये सारे तीन जो इक्वेशन मैंने लिख के दिए थे आपको, ये तीनों इक्वेशन आपको याद है, बिकॉज दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो कि मैंने बताया भी था, राइट? So what we will do today, we will just revise few of the things from the previous lectures आणि जे आपल्याला दोन इक्वेशन प्रूफ करायचे आहेत, राईट? तर त्याचा प्रूफ आपण बघूयात. सो द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी. आता सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचंय व्हॉट इज v, व्हॉट इज u, व्हॉट इज a अँड व्हॉट इज t. फर्स्ट इक्वेशन मध्ये v काय आहे, u काय आहे, ए काय आहे आणि टी काय आहे, सगळ्यांनी लिहायचे. स्क्रीनवरती ऑलरेडी लिहिलेलं आहे, ते बघून जरी लिहिणार असाल दॅट इज ऑल्सो ओके. v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time, right? So that is the first equation of motion. Now दुसरं इक्वेशन काय आहे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वेअर. तर आता याच्यामध्ये s काय आहे, व्हॉट इज s? लिहा सगळ्यांनी चॅटबॉक्स मध्ये लिहा. s इज डिस्प्लेसमेंट, राईट? सगळ्यांना माहिती आहे ना की कन्फ्युजन होत आहे? ओके, नाउ s is displacement. Now one more question for you guys is, what is difference between displacement and distance? Who will tell? Who will tell the difference between displacement and distance? Anyone? कोणीतरी सांगा. डिस्प्लेसमेंट अँड डिस्टन्स. नो वन? ओके फाईन. चॅट बॉक्स मध्ये लिहित असणार मोस्टली तुम्ही, त्याच्यामुळे वेळ लागतोय. ठीक आहे, तर हे तीन आपले इक्वेशन्स आहेत, मोशनचे तीन इक्वेशन्स आहेत. हे तीनही इक्वेशन्स तुम्हाला पाठ असावेत अशी अपेक्षा आहे. सो सिन्स वी हॅव अ न्यू स्टुडंट, व्हॉट वी विल डू, वी विल जस्ट रिवाइज द कम्प्लीट थिंग्स, ओके, क्विकली. तर आपण थोडस सुरुवातीपासून सुरू करूयात. सो आपला जो चॅप्टर आहे दॅट इज
लॉज ऑफ मोशन म्हणजेच मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं तर गतीचे नियम. ओके, गतीचे नियम. आता यामध्ये आपण पहिला टॉपिक जो आहे तो बघितला होता डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स. तर मी तुम्हाला तेच विचारतोय सगळ्यांना की डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स मध्ये फरक काय आहे. मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स, तर मराठीमध्ये डिस्प्लेसमेंटला म्हणतात विस्थापन आणि डिस्टन्सला म्हणतात अंतर. ओके, सी you can see it here. Now Kadambari has given answer. Displacement is the minimum distance between starting and finishing points. Displacement is the minimum distance between starting and finishing point. Very simple and clean definition. Right. Now what is distance? बाकीच्यांनी पण आन्सर द्या. बाकीच्यांना झोप येते का? What is distance now? Displacement ची तर डेफिनेशन कादंबरीने लिहिली. अंतर म्हणजे काय? तर कुठल्याही वस्तूने distance is actual length or the path covered by the object. म्हणजे कुठल्याही वस्तूने जो ऍक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल केलेला आहे त्याला आपण डिस्टन्स असे म्हणतो. ओके, मग डिस्प्लेसमेंट मधला आणि डिस्टन्स मधला म्हणजेच विस्थापन आणि अंतर मधला फरक आपल्याला समजलेला आहे. नाउ लेट्स गो फर्दर. स्पीड अँड वेलॉसिटी. तर स्पीड आणि वेलॉसिटी ला मराठीमध्ये आपण म्हणतो चाल आणि वेग. स्पीड इज चाल अँड वेग म्हणजे वेलॉसिटी. ओके, आता मला सांगा, चाल ही जी आहे किंवा स्पीड, वेन वी टॉक अबाउट स्पीड, स्पीड इज अ वेक्टर और स्केलर? स्पीड इज अ वेक्टर और स्केलर? सदिश आहे की अदिश आहे? आयुष, तुला पण आन्सर्स द्यायचे चॅट बॉक्स मध्ये. ओके, सगळ्यांनी आन्सर द्यायचे. एव्हरीवन प्लीज कीप युअर सेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द लेक्चर. या आयुष मेथा एज वेल एज आयुष गोयाजी. ठीक आहे. स्पीड इज अ वेक्टर? रियली? स्पीड इज अ वेक्टर? How can you people forget so early? Speed is a scalar quantity, na? Speed don't have direction, right? Speed don't have direction, so it is scalar. म्हणजे चाल जी आहे ती अदिश आहे, म्हणजे त्याला दिशा नाहीये. स्पीडला दिशा नाहीये. And the other thing, that is velocity. Velocity is obviously vector because it depends or it has some direction. बरोबर? Now let's take the next point or the topic, that is acceleration. Acceleration किंवा मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं तर त्याला आपण त्वरण असे म्हणतो. ठीक आहे, तर मी हाच क्वेश्चन तुम्हाला परत एकदा करतो की जो मी अगोदरही तुम्हाला केलेला आहे. लेट अस सपोज वेलॉसिटी किंवा वेग जो आहे तो झिरो नाहीये. वेलॉसिटी इज नॉट झिरो. then acceleration can be zero or not. Can it be zero? Velocity is not zero. There is some velocity, म्हणजे काहीतरी वेग आहे, तर मग त्वरण झिरो असू शकतं की नाही? सी, आपण रिव्हिजन घेतोय म्हणून थोड्याशा गोष्टी फास्ट वाटतील. ओके, आयुष ज्याने की आज नवीन जॉईन केले ना, तर काही गोष्टी नवीन वाटू शकतात, म्हणजे थोडंसं फास्ट वाटू शकतं. बट वी गो व्हेरी स्मूथली, म्हणजे आपण खूपच हळुवारपणे चालतो, हे सगळ्या विद्यार्थ्यांना माहिती आहे. ओके, नाव सांगा, सगळ्यांनी सांगा. चला, let us suppose there is some velocity. Let us suppose 40 kilometers per hour is the velocity. In that case, is there any possibility की acceleration पण झिरो असू शकतो? नाव ठीक आहे, मी क्वेश्चन अजून सोपा करतो. व्हॉट इज ऍक्सिलरेशन? हो किंवा यस? यस असू शकतं. ऍक्सिलरेशन झिरो असू शकतं. व्हॉट इज ऍक्सिलरेशन बेसिकली? त्वरण म्हणजे काय? व्हॉट इज ऍक्सिलरेशन? सांगा.
change in velocity, change in velocity per time, change in velocity divided by time is nothing but the acceleration. म्हणजे ऍक्सेलरेशनची जर आपल्याला सोपी डेफिनेशन सांगायची की लेट अस सपोज आता माझा जो वेग आहे तो आहे 20 किलोमीटर पर आवर आणि काही वेळाने माझा जो वेग आहे तो होतो 40 किलोमीटर पर आवर. तर मग हा चेंज झाला ना. आता माझा अगोदर वेग 20 होता, नंतर 40 झाला, तर म्हणजे हा वेग आता चेंज झालेला आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सी, मी ह्या गोष्टी तुम्हाला परत परत रिपीट का करतोय? वाय मैं ये सारी चीजें आपको रिपीट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू बी so much comfortable in these terms. Like even if somebody wakes you up in the midnight and asks this question, you should be able to answer it. That is what my motto is. Okay, that's why we are repeating the things, and I hope you are also revising the things at home. तुम्ही पण घरी revise करताय. Focus on this chapter. This is very important chapter. These all things are very important. If you have any kind of doubt, तुम्हाला कुठलाही डाऊट असेल, तुम्ही मला क्लासमध्ये विचारू शकता किंवा मग इव्हन क्लास आपला जो होमवर्क असतो ना क्लासरूम मध्ये, तर तिथेही तुम्ही ते चॅटमध्ये तुम्ही ते लिहू शकता. ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर, मूव फॉरवर्ड. पॉझिटिव्ह, नेगेटिव्ह अँड झिरो ऍक्सेलरेशन. म्हणजे ऍक्सेलरेशन किंवा त्वरण ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, ते पॉझिटिव्ह पण असू शकतं, नेगेटिव्ह पण असू शकतं आणि जीरो पण असू शकतं. मतलब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, and it can be zero as well. Okay, now from you people, you will give me the answer how the acceleration can be positive, it can be negative, and it can be zero. So माइक ऑन करायचंय. ओके, ज्याला माइक ऑन करायचं आहे त्याने चॅटबॉक्स मध्ये नाव लिहा, so that I will give the opportunity to turn on your mic and you can speak up. Tell me, who is interested? How acceleration can be positive, negative and zero? One by one सांगायचंय. ओके, नॉट नेसेसरी की कोणीतरी चॅटबॉक्स मध्ये नाव लिहिलं त्याने सगळे आन्सर द्यायचे नाही. एक आन्सर तुम्ही द्या, एक आन्सर दुसरा व्यक्ती देईल, एक आन्सर तिसरा विद्यार्थी देईल. 3 आन्सर्स. ओके, तर सांगा पटकन. डोंट वेस्ट युअर टाइम as well as my time. ठीक आहे, सांगा हाऊ ऍक्सेलरेशन कॅन बी पॉझिटिव्ह. Nobody is interested to. Okay, very good. Big hands for Vedant. Now Vedant has given first name. Vedant, please turn on your mic and tell me. Sir, I'm audible. Yes, you are. Sir, positive, no, you said? See, acceleration can be positive, right? Hello. Sir, which I have to tell? Positive, negative, or zero acceleration? Positive acceleration. Please tell me. When the velocity of an object increases, the acceleration increases. And sorry, the acceleration is positive. Okay, when the velocity increases, like let us suppose the acceleration is 20 kilometers per hour. Sorry, velocity is 20 kilometer per hour, and after some time it becomes 40 kilometer per hour. That means the velocity has increased, and in that case, acceleration can be said as positive acceleration, right? Yeah, good. So Vedant has given his answer. Kadambari, please tell me what is negative acceleration? Yes, sir. The acceleration is in the direction of velocity. When the velocity of an object decreases with time, it has negative acceleration. Very good. When the velocity decreases, म्हणजेच जर आपला वेग 40 किलोमीटर पर आवर आहे आणि आफ्टर सम टाइम म्हणजे काही वेळानंतर जर तो वेग आपला 10 किलोमीटर पर आवर होतोय, तर त्यावेळेस आपण काय म्हणतो की ऍक्सेलरेशन कमी झाले किंवा नेगेटिव्ह, दॅट इज नेगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन. अँड झिरो ऍक्सेलरेशन इज नो चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंजच होत नाहीये, त्वरण चेंज होत नाहीये, बदल होत नाही त्वरणामध्ये. त्यावेळेस आपण म्हणतो की ऍक्सेलरेशन कसं आहे, झिरो ऍक्सेलरेशन आहे. ठीक आहे, आपण डिस्टन्स टाइम ग्राफ बघितलेला आहे फॉर युनिफॉर्म मोशन. युनिफॉर्म मोशन काय असतं तेही बघितलेलं आहे की जर इक्वल
टाइम इंटरवल मध्ये जर इक्वल डिस्टन्स ऑब्जेक्ट कव्हर करत असेल तर त्याला आपण म्हणतो युनिफॉर्म मोशन. ठीक आहे. नाउ आय वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन टू आयुष गोयजी. आयुष, समजतंय ना मी जे काही सांगतोय त्या गोष्टी समजतायत ना की अजून मराठीमध्ये बोलायचंय? आयुष, आय वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू. ओके, थँक्यू, गुड. सो या, आयुष इज लिस्निंग टू अस नाउ, गुड. सो ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ना आयुष, ह्या आपल्या अगोदर 1-2 क्लास झालेले आहेत, त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी मी एकदम डिटेलमध्ये क्लिअर केलेल्या आहेत. सो यू कॅन जस्ट गो थ्रू द युट्यूब व्हिडिओज, बाकीच्या तुला सगळ्या गोष्टी समजतील. ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, मेन टॉपिक, दॅट इज द डेरिव्हेशन ऑफ आवर इक्वेशन्स. आपण पहिलं इक्वेशन कसं आलं हे ऑलरेडी बघितलेलं आहे. ओके, सेकंड इक्वेशन विषयी आपण थोडस म्हणजे थोडं फास्ट मध्ये आपण ते बघितले, पण आपल्याला ती डिटेल्स मध्ये बघायचं. Okay, second equation is what? S is equals to ut plus 1 by 2 a into t square. नाउ याच्यामधल्या प्रत्येक गोष्टीचं तुम्हाला काय कशाला काय म्हणतात ते चांगलं माहिती है, आपको सब पता है कि किसको क्या कहते हैं. तो सिर्फ हमें क्या करना, क्या है हमें करना ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि या फिर डिराइव करना है कि इक्वेशन आया कहां से, राइट? तो हमने देखा था कि जब भी हम when we talk about the equation of motions, then this is linear motion, right? Linear motion means what? The motion is in one direction only. Okay, you can see this here, three equations of motion along a straight line. See, these relate the displacement, velocity, acceleration and time of an object moving along a straight line. म्हणजे जर एखादा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाईन मध्ये मूव्ह करतोय तरच त्या ऑब्जेक्ट साठी हे इक्वेशन ऑफ मोशन्स अप्लाय होतात. तर मग याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट म्हणा किंवा मग डिस्टन्स म्हणा, डझंट मॅटर, बोथ द टर्म्स आर सेम. बिकॉज वाय? बिकॉज द मोशन इज इन स्ट्रेट लाईन and we have already learned that when the motion is in straight line, then velocity and speed are nothing but the same things, and distance and displacement are nothing but the same terms. Yeah, so let's go for the second equation. Now to derive the second equation we need to observe this फिगर अगेन. आपल्याला ही जी आकृती आहे ना ही परत एकदा समजून घ्यायची, जी की आपण ऑलरेडी पहिलं इक्वेशन सॉल्व्ह करताना समजून घेतलेली आहे. पण याच्यामध्ये काय बघा, एक्स ऍक्सिस वरती ऍज यू कॅन सी हिअर, एक्स ऍक्सिस वरती काय आहे, टाइम दिलेला आहे आणि वाय ऍक्सिस वरती वेलोसिटी दिलेली आहे. वेलोसिटी मीन्स मराठीमध्ये त्याला आपण वेग असं म्हणतो. ओके, हा, तर ह्या आकृतीमध्ये तुम्ही जर यू बघणार, यू इज व्हॉट? यू इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फायनल वेलोसिटी अँड t इज द टाइम इन्स्टन्स दॅट वी आर कन्सिडरिंग, हा इथला t. ओके, तर आपण याच्या अगोदरची जी आकृती होती किंवा जी फिगर होती त्याच्यामध्ये एक गोष्ट आपल्याला समजलेली आहे की डिस्टन्स इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफच्या अंडर जो एरिया येतो त्या एरियालाच आपण डिस्प्लेसमेंट किंवा डिस्टन्स म्हणू शकतो व्हेन इट इज लिनियर मोशन. ओके, समझला मी जो स्टेटमेंट बोलतोय, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, समझ में आया? डिस्टेंस इज व्हाट? डिस्टेंस इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यस और नो, समझले की नाही? See, this area is there. We had already discussed in the last lecture as well. Displacement or distance is the area under velocity time graph. कोणाचाही रिस्पॉन्स येत नाही चॅट बॉक्स मध्ये, व्हॉट इज प्रॉब्लेम? Oh, wait. Huh? So why I'm unable to see the chats here? Okay, yeah. Now I'm getting the chats. Fine. So, see,
what is the area of this part? The area of this triangle as well as the area of this rectangle. We have already seen that, right? So how can we find out the area? See, S is equals to, S is displacement or the distance. Area of the quadrangle DOEB. Where is the quadrangle DOEB? DOEB. No, sorry, DOEA. Area of the triangle DOEA. So DOE and A. So this is the quadrangle. This plus the area of the triangle DAB. This area DAB. Right. So what it can be? AE into OE. Area of the rectangle, we know that L into B. So L is here OE or DA and B is here AE or DO. Right. So we have written that here. Similarly, we have found out the area of triangle as well, 1 by 2 base into height. So base is DA here and height is AB here. ओके, तर अशा प्रकारे आपण दोन्हीही एरिया काढलेले आहेत. मग या दोन्हीही एरियामध्ये सबस्टिट्यूशन कशा प्रकारे करायचं, कशाच्या ठिकाणी काय सबस्टिट्यूट करायचं मी तुम्हाला व्यवस्थितपणे समजून सांगितलेलं आहे, बरोबर. तर त्या गोष्टी सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपल्याला सेकंड इक्वेशन मिळतं, हे आपण लास्ट लेक्चर मध्येही बघितलंय. ओके, नाउ द व्हेरी इम्पॉर्टंट इज थर्ड इक्वेशन, तिसरं इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज थर्ड इक्वेशन? वी विल सी. V square is equals to U square plus 2AS. So for the reference purpose, I will write the equation here. V square is equals to U square plus 2AS. Good. Now, equation describing the relation between displacement and velocity. Okay. We have seen that from the graph 1.9, we can obtain the distance covered by the object in time t from area of the quadrangle DOEB. DOEB is a trapezium, so we can use the formula for its area. Now see, second equation ज्यावेळेस आपण find out केलं ना, when we found out second equation, we used the area of this triangle plus the rectangle. Okay, now we want to find out the third equation. Now for the third equation, what we are doing, we are using this as a trapezium. See, these two are parallel sides, DO and EB. These two are parallel sides and these two are the other sides. So this will be a trapezium, right? So फर्स्ट इक्वेशन मध्येही आपण ह्याच फिगरचा यूज करून आपण इक्वेशन डिराइव केलेला आहे. सेकेंड इक्वेशन मध्ये अपन क्या किया, व्हाट वी डिड इन द सेकेंड इक्वेशन, हमने सेकेंड इक्वेशन में ट्रायंगल और रेक्टेंगल की मदद से सेकेंड इक्वेशन डिराइव किया. एंड इन द थर्ड, टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन, we are using the same figure but with a different concept, that is we are taking the area of trapezium here. Okay, so please tell me how many of you got the trapezium, कि या फिगर मध्ये ट्रैपेजियम आहे. ओके, इस फिगर में ट्रैपेजियम है, ऐसा कितने लोगों को दिख रहा है यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द ट्रैपेजियम हियर? ओके, यू कैन सी द ट्रॅपेझियम. गुड. ट्रॅपेझियमलाच मराठीमध्ये बोलतात समलंब चौकोन. ओके, व्हेरी गुड आयुष. आयुष कैन सी ऑल्सो. फाइन, ठीक है, चला. आयुष, यू आर फ्रॉम सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम? आयुष, सेमी इंग्लिश. ओके, फाइन, ठीक आहे, काही हरकत नाही. लेट्स गो फर्दर. सो आपल्याला आता ट्रॅपेझियमचा एरिया काढायचा आहे. वी हॅव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम. सो व्हॉट इज द एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम? 1/2 sum of lengths of parallel sides multiplied with distance between the parallel sides. How many of you remember this formula? Please be honest. I guess you have learned the formula of trapezium in the 8th standard, I guess, or in the 7th standard. Okay, Kadambari remembers it. Fine. So this is the formula for area of trapezium. 1/2 sum of lengths of its parallel sides multiplied with distance between them.
Now you can see here clearly that the parallel sides are OD and EB, right? So यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि sum of parallel sides is OD plus EB or BE, one and the same, right? B म्हणलो काय मी आणि EB म्हणलो काय, सेमच आहे. Multiplied with OE. Now what is OE? OE is the distance, or the, what we can say, yeah, distance between the parallel sides, right? So we have written all the things here, formula written, the sides written. Now the best thing is we have to do the replacements कि OD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, B की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, OE की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं. So you can clearly see here OD can be written as U, BE can be written as V, and OE can be written as T. How? First of all, we'll check OD. OD is written as U. So see, this is OD. This is nothing but U, right? Now BE is nothing but V. B is nothing but V, and what is remaining? OE. OE is nothing but T. So we have replaced all these things. So we have got the formula, that is S is equals to, let me just zoom in, S is equals to 1 by 2 into U plus V into T. Okay, हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळालेला आहे, राईट. नाउ व्हॉट इज रिक्वायर्ड, आपल्याला पाहिजे काय, आपल्याला पाहिजे V स्क्वेअर मायनस U स्क्वेअर प्लस 2AS. पण आपल्या ह्या फॉर्म्युलामध्ये A नाहीये, we don't have A, right? We don't have A, as well as we don't have V square and U square. So how can we find out that? So see, we have learned one formula. What is our first formula? First formula is V is equals to U plus AT, right? आता ये जो U है मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा. So V माइनस U इज इक्वल्स टू क्या हुआ, AT, एंड V इज इक्वल्स टू क्या, V डिवाइडेड बाय U डिवाइडेड बाय T इज इक्वल्स टू क्या हुआ, A. बराबर, जो कुछ मैंने किया सही किया ना यहाँ पे, या सो यही फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है. बराबर, पहले फॉर्मूला को मॉडिफाई करके यहाँ पे यूज किया है. नाउ इस T को मैं यहाँ पे भेज दूंगा एंड इस A को मैं यहाँ पे ले आऊंगा, फिर भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा ना. T इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई A, V माइनस U बाई A. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस? यहां तक किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं समझ में आया, यस और नो में लिखिए. अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करूंगा. गुड. कादम्बरी, वीरेंद्र, फाइन, ठीक है. नो विशाल, दैट्स फाइन, ठीक है विशाल. या और स्टूडेंट्स, आयुष, मेहता, ठीक है. आयुष, दोनों आयुष को समझ में आ गया, वेरी गुड. सी आयुष, विशाल, सॉरी, वी हैव यूज्ड, सी आई होप यहां तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया है. विशाल को यहां तक समझ में आ गया है कि हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालना था, तो हमने ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और उसी हिसाब से हमने सारे जो हमारे रिप्लेसमेंट्स है ना, ओडी की जगह पे यू लिखना, बी की जगह पे वी लिखना, ये हमने ऑलरेडी सीखा है कि ये क्यों करना पड़ता है, वो हमने यहाँ पे किया भी. लेकिन सिंस हमारे पास वी स्क्वायर नहीं था, यू स्क्वायर नहीं था, और ए भी नहीं था, तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं से लानी है. ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला मॉडिफाई किया, एंड हमने यहाँ पे टी के लिए कुछ यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की. सो वी कैन रिप्लेस दिस टी. ओके, सी, इफ यू सी इन दिस फॉर्मूला, टी इज नॉट नीडेड, हमें टी की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला में. सो वी कैन एलिमिनेट द टी. हाउ वी कैन एलिमिनेट द टी? टी कैन बी एलिमिनेटेड विद दिस फॉर्मूला. सी, टी की जगह पे हम v माइनस यू डिवाइडेड बाय a लिखेंगे, तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बना, s इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 इनटू u प्लस v. सी, u प्लस v इज दिस, इनटू v माइनस u डिवाइडेड बाय a. गुड. नाउ if we simplify this, s is equals to
in one bracket a plus b, in one bracket a minus b divided by 2a. So take this 2a here, right? Take this 2a here. So 2as is equals to, in one bracket a plus b, a minus b. So that becomes a square minus b square, right? A square minus b square. So what we have currently, we have 2as is equals to v square minus u square, राइट। तो अभी इस u को जो है मैं राइट साइड में भेज दूंगा, इस u को मैं राइट साइड में भेज दूंगा। सो हमें हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। Hence we have got our third formula of motion, right? We have got the third formula of our motion. So everyone please put in the chat box कि आप लोगों में से कितने लोगों को 3 फॉर्मूलाज ऑफ मोशन जो है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वो समझ में नहीं आए। 3 में से कौन सा समझ में नहीं आया, पहला नहीं समझ में आया, सेकंड नहीं समझ में आ रहा है, या फिर तीसरे में कुछ डाउट है, तो पूछ सकते हो कि सर मुझे इस फॉर्मूला में इस टर्म में डाउट है। नो डाउट सेकंड फॉर्मूला में? ओके, सेकंड फॉर्मूला में ओके गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वीरेंद्र को डाउट है। वीरेंद्र कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक? सी आय एम नॉट लाईक म्हणजे तू डाऊट विचारतोय म्हणून तुला माईक ऑन करायला लावायचं, तसं नाही, पण मला जस्ट विचारायचं की कुठली गोष्ट आहे जी की तुला समजली नाही। प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड टेल मी। The second formula of motion. ओके, हा ठीक आहे। सेकंड फॉर्म्युला मध्ये एक्झॅक्टली काय नाही समजलं किसी। आता सेकंड फॉर्म्युला आपला आहे काय, सेकंड फॉर्म्युला आपला आहे एस इज इक्वल्स टू 1/2 AT स्क्वेअर, राइट? एस इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वेअर, दिस इज आवर सेकंड फॉर्म्युला। सो सेकंड फॉर्म्युला आपण ज्यावेळेस फाइंड आउट केला त्यावेळेस आपण काय केलं, आपण बेसिकली तो जो आपला एक फिगर होता ना की वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, त्या वेलोसिटी टाइम ग्राफचा आपण एरिया फाइंड आउट केला। एरिया फाइंड आउट अशा प्रकारे केला की एक त्या एरिया में, उस एरिया में हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल हमने मतलब ट्रायंगल ढूंढ के निकाला, एक रेक्टेंगल ढूंढ के निकाला, उन दोनों का एरिया निकाला हमने और उसे ऐड कर दिया। सो दिस इज हाउ वी गॉट द सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था, मतलब जो हमारा पिछला क्लास था ना, तो उसमें भी तुम एक बार देख सकते हो यूट्यूब पे जाके। एंड इफ देन आल्सो यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। फाइन, नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, the speed of the tip of a clock is constant, but the direction of its displacement and therefore its velocity is constantly changing. As the tip is moving along a circular path, its motion is called uniform circular motion. Can you give more examples of circular motions? Can you give any of the example of circular motion? Yeah, clock is the one. Clock is the one that is already given. We can say fan, but not exactly. That is a different concept, like space, not the space, but the planets, Earth. And let me just tell you, Vishal, कि मतलब हमारे जो अर्थ का जो ऑर्बिट है ना, that is quite elliptical orbit, not exactly the circular orbit, circular orbit. But still we can say it as a circular motion, no issues. It is not perfectly circle orbit, isn't it? Motor, maybe not. Wheels, ओके फाइन, ठीक है, चलो। तो बहुत सारे आप लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ, मतलब आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है। अभी फिलहाल तो वो सब चीजें होती नहीं है, लेकिन जब पुराना जमाना, मतलब कुछ दिनों पहले की बात है, लाइक 15 years बैक, कि खेत में, मतलब आपको पता है ना कि ज्वारी हो या फिर बाजरी हो, इसकी खेती हुआ करती थी। मतलब अभी भी खेती तो अभी भी होती है, लेकिन उसमें जब वो, मतलब वो जो
क्रॉप है वो जब बड़ा हो जाएगा ना, तो उस पे कुछ पंछी आके बैठते थे, चिड़िया, मतलब कुछ भी वो खाने के लिए वहां पे। आपको पता है, मतलब खेत में कभी देखा होगा ना कि वो पंछी परेशान करते हैं जो फार्मर्स होते हैं उनको। सो फार्मर्स क्या करते हैं, मतलब अभी क्या 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 करते हैं, आई डोंट नो, वो पेस्टिसाइड्स की वजह से या फिर इसकी वजह से वो चिड़िया आने ही बंद हो गई, या फिर वो, मतलब आई डोंट नो द रीजन। लेकिन तब क्या करते थे पता है आपको? दे यूज टू यूज वन वेपन, जैसे कि गोफन कहा जाए, या व्हाट इज ट्री सर्कुलर मोशन, गोफन कहा जाता था। सो क्या होता था ना कि उसमें एक लाइक, मतलब ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते थे जिसपे खड़ा होके ना वो जो फार्मर है वो ऐसे घुमाता था सर के ऊपर से, एंड उसमें एक पत्थर रहता था, तो वो उस पत्थर से वहां पे मारता था, तो उससे क्या होता था कि वो चिड़िया वगैरह जो पंछी वगैरह है ना, तो वो उड़ जाते थे खेत में से। आपको आपको मतलब देखा है कभी किसी ने, आप में से? देखा तो नहीं होगा, देखा तो मैंने भी बहुत दिनों पहले, लेकिन कहीं ना कहीं भी किताब में या फिर मूवी में कहीं पे भी, राइट? सो दैट कैन बी सेड एज सर्कुलर मोशन ना, इन टीवी में देखा है, ओके। तो दैट इज सर्कुलर मोशन, इजंट इट? वो जो पत्थर है उस गोफन के अंदर का, वो जो फार्मर जब घुमाता है, तो दैट इज नथिंग बट द सर्कुलर मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोन, इजंट इट? या, सो ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट। तो ये जो है, ये एक्टिविटी आप लोगों को करना है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, वी विल डिस्कस डायरेक्टली। When an object moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to change in direction. Very, very important statement. What is? The change in velocity is only due to change in direction. जब हम किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन में मूव करा रहे हैं, या फिर वो चीज खुद ब खुद मूव हो रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक सी, यहाँ पे क्या हो रहा है? जब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, सो उसकी डायरेक्शन पहले ये थी, बाद में उसकी डायरेक्शन ये हुई, बाद में इसकी डायरेक्शन ये, बाद में, मतलब डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। स्पीड चेंज हो रहा है क्या? स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड इज सेम, but the direction is continuously changing. And when we talk about circle, now see, if we talk about this particular polygon, how many sides are there? 2, 4, 6, six sides are there, right? Hexagon is this. So hexagon में 6 साइड है, तो उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई? 6 बार चेंज हुई, बराबर? वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन 6 बार चेंज हुई। So in a circle, how many sides are there? How many sides are there in a circle? सर्कल इज ऑल्सो पॉलीगॉन, आप लोगों को पता है? सर्कल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। नो, जीरो साइड्स नहीं, नहीं कादम्बरी, नहीं। थोड़ी सी गलती हो रही है आप लोगों से। जीरो इज नॉट द आंसर। फर्स्ट थिंग इज हाउ मेनी ऑफ, ओके, वन, ओके, फॉर समबडी इज गिविंग 260, 360, sorry, okay. How many of you agree with me that circle is also a polygon? How many of you agree? Yes, no? Okay, कादम्बरी agrees that circle is a polygon. मतलब सर्कल के भी साइड्स है। पॉली मीन्स मेनी, राइट? गॉन मीन्स साइड, पॉलीगॉन्स। सो सर्कल के कितने साइड्स होते हैं? किसी ने कहा 0, किसी ने कहा 360। करेक्ट आंसर इज इन्फिनिटी, विच इज गिवन बाय वीरेंद्र पाटिल। इनफाइनाइट साइड्स होते हैं। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। अभी आप बोलोगे कि सर आप मतलब बोल रहे हो कि इनफाइनाइट साइड्स होते हैं, लेकिन हम कैसे मान ले? देखना, यहाँ पे 6 साइड्स है, तो इस तरह से कुछ हमारी फिगर दिख रही है, राइट? तो मान लीजिए अभी मैं 6 की जगह पे ना इसको 12 साइड्स कर दूं, राइट? 12 साइड्स का मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सी, दिस फिगर इज स्टार्टेड टू लुक लाइक अ सर्कल। लाइक सी, मैंने जो पिंक में ड्रॉ किया ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली द पॉलीगॉन विथ 12 साइड्स, बट आई वाज ट्राइंग टू ड्रॉ द पॉलीगॉन विथ 12 साइड्स। तो मान लीजिए कि मैं 12 की जगह पे 24 कर दूं, 24 की जगह पे 48, 48 की जगह पे मैं 100 साइड्स कर दूं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक असाइनमेंट दे देता हूँ। व्हाट इज योर असाइनमेंट?
You have to draw a polygon with 200 sides. How many of you will complete the assignment? How many of you want to try? ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है, मतलब आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो, दैट इज रियली फाइन, बट दिस इज नॉट योर असाइनमेंट। या आयुष, तुम मतलब आयुष को भी करना है, फाइन, ठीक है। सो दिस इज नॉट योर होमवर्क, ओके, दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी फॉर यू टू नो, टू अंडरस्टैंड दैट सर्कल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। आप ना कभी भी अगर आपको मतलब समय मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है करने के लिए, पढ़ाई का भी मन नहीं कर रहा है, खेलने तो बाहर जा नहीं सकते, टीवी भी देखने का मन नहीं कर रहा है, मोबाइल में गेम खेलने का भी मन नहीं कर रहा है, तो तब जाके आप ये एक्टिविटी ट्राई करना। कौन सी एक्टिविटी? ड्रॉ अ पॉलीगॉन विथ 200 साइड्स। ठीक है, ट्राई करना, मजा आएगा आपको भी। तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब फॉर यू। ओके, या सो हम कहां से कहां चले गए? ठीक है, तो मैं ये चीज बता रहा था कि when the object is in circular motion, then the change in velocity is only due to change in direction. That means its direction is changing at every point, and hence it is called accelerated motion. Change in velocity means what? Acceleration. When the velocity changes, either the direction or the speed changes. So speed is constant, direction is changing, that's why velocity is changing. Velocity is changing, that's why acceleration comes into the place, right? So when an object moves with a constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है, मूव करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन दैट मोशन इज कॉल्ड circular motion, uniform circular motion. Example, the motion of a stone in a sling or that of any point on a bicycle wheel when they are in uniform motion. ठीक है, तो बाइसिकल का जो व्हील रहेगा वो भी सर्कुलर मोशन कह सकते हैं हम, एंड जो स्लिंग मैंने बोला था ना आपको, वो गोफन नाम का जो मराठी में रहता है, सो दैट इज। Now, if an object moving along a circular path of radius r takes time t to come back to its starting position, its speed can be determined using the formula given below. तो स्पीड, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हमें स्पीड मेजर करना है, नॉर्मली अगर हमें स्पीड मेजर करना है तो हम क्या करते थे? वी हैड द वन फॉर्मूला, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ट्रिक भी बताया था कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू वेलोसिटी, डिश टीवी, राइट? मैंने आपको ऐसे याद रखने को बोला था ना। तो वेलोसिटी एंड स्पीड वी आर कंसिडरिंग एज वन, सो वी विल बी इक्वल्स टू डी बाई टी। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, बराबर। मतलब अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या फिर सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड निकालना है, तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी circumference, right? Circumference of the, or the perimeter of the circle will be the actual distance traveled by the object. So that's why we take the formula speed is equals to circumference by time, and the formula for circumference is 2 pi r, and for time we write t, and r is the radius of the circle, right? So अभी स्पीड किस तरह से निकालना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की या फिर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो आपको पता चल गया है, right? Now, determining the direction of velocity in uniform circular motion. तो अभी हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफाइन करनी है, डिटरमाइन करनी है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Take a circular disc and put a 5 rupee coin at a point along its edge. Make it move around its axis by putting a pin through it. When the disc is moving at higher speed, the coin will be thrown off as shown in figure 1.1. Note the direction in which it is thrown off. Repeat the action, placing the coin at different points along the edge of the circle, and observe the direction in which the coin is thrown off.
तो आप लोग अभी मुझे बताइए, ये जो फिगर है ये 3D दिखाने का कोशिश किया है, लेकिन ये मतलब इट्स काइंड ऑफ अ 2D। तो मैं थोड़ा सा बेटर फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट मतलब मैं नहीं जानता कि मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। तो सी, लेट अस सपोज दिस इज योर डिस्क। Okay, this is your disk and this is in moving position, right? It is moving in a circular motion. So for example, if I put the coin here, okay, if I put the coin here, so what will be the direction of the velocity? तो वो coin जो है वो कहाँ पे throw होगा? Maybe this coin will be thrown like this, right? अगर मैं coin यहाँ पे रखता हूं तो coin यहाँ पे throw हो जाएगा, बराबर ना? मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो समझ रहे हो ना आप लोग? अगर मैं कॉइन यहाँ पे रखता हूँ तो कॉइन ऐसा सीधा चला जाएगा ना, बिकॉज द डिस्क इज मूविंग। ट्राई टू इमेजिन ना, डिस्क इज मूविंग, सो इट विल थ्रो अवे द कॉइन स्ट्रेट, राइट? स्ट्रेट ऐसा थ्रो करेगी। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? व्हाट कैन वी कंक्लूड? विल सी। The coin will be thrown off in the direction of tangent which is perpendicular to the radius of the disk। अगर मैं यहाँ पे फिर से उसे ड्रॉ करूं तो ये सारी जो डायरेक्शंस है, सी द फर्स्ट डायरेक्शन as well as the second direction and the third direction, these are nothing but the tangents to the radius of this particular disk or circle। तो अगर मैं यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज अ सेंटर एंड दिस इज अ रेडियस, अगेन दिस इज अ रेडियस एंड दिस इज अ रेडियस। सॉरी फॉर द नॉट स्ट्रेट लाइंस, मतलब इतना मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। तो दिस विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री एंड दिस विल बी 90 डिग्री, राइट? तो एक कंक्लूजन हमें क्या मिला कि द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट which is perpendicular to the radius of the disk. Thus, the direction in which it gets thrown off depends on its position at the moment of getting thrown off। ठीक है, मतलब आप जहां पे उस कॉइन को ड्रॉप कर रहे हो मूविंग डिस्क पे, दैट पोजीशन विल डिटरमाइन इट्स direction of being thrown off। It means that as the coin moves along a circular path, the direction of its motion is changing at every point। मतलब अगर हम डायरेक्शन की बात करें, हमने कहा था ना हमें डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें डिटरमाइन करनी है। तो कैन वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? नो वी कांट, बिकॉज इट्स चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन विजुअलाइज द थिंग? मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें सोच पा रहे हो आप लोग कि हर जगह पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट। हाउ मेनी ऑफ यू स्ट्रांगली एग्री विथ मी? अगर किसी को डाउट है, अभी भी विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो बताओ मुझे, राइट? तो ये एक्टिविटी कल घर पर करके देखना, लेकिन सिर्फ मतलब कोई पिन वगैरह खुद को चुभवा के नहीं लेना है, ठीक है? यू कैन डू द एक्टिविटी एट होम। या so this is already we have seen, you might have seen, मतलब मुझे ये पुरानी चीजें बहुत ज्यादा याद आती है। so I will be speaking in मराठी। तुम्हाला ते माहिती आहे जातं असतं बघा, त्याच्यामध्ये जुन्या काळामध्ये हे करायचे, पीठ दळायचे, म्हणजे धान्य वगैरे दळायचे, गहू ज्वारी, आणि मग ते पीठ पडायचं, राईट ना? किंवा मग इव्हन तुम्ही गिरणी पण बघितली असेल, तर गिरणीमध्ये पण तुम्ही जर बघणार तर एक एक म्हणजे साईडला असं एक आउटलेट असतं, त्याच्यामधनं आपलं पीठ जे आहे ते खाली पडत असतं, राईट? मग ज्यावेळेस ते जातं फिरतं ना, त्यावेळेस ते जे पीठ ते बाहेर फेकतं, दॅट इज ऑल्सो नथिंग बट द टँजंट टू द रेडियस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जातं। म्हणजे ते पीठ तुम्ही जर बघणार ना, तर एक असं एका विशिष्ट पॅटर्नच ते खाली पडतं, बरोबर ना? कसंही नाही पडत, है की नाही? तर ते असं एक विशिष्ट प्रकारे, दॅट इज बिकॉज ऑफ द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन। नाउ we will take one or two examples and then we will stop for here, stop for today, because it is already late today। मतलब मुझे थोड़ा सा काम था तो 7 बजे हमारा लेक्चर नहीं हो पाया, तो इसी वजह से आज हमें लेट लेक्चर लेना पड़ रहा है। मोस्टली हमें जो अगला साइंस का लेक्चर रहेगा ना थर्सडे को, तो वो भी इसी टाइम पे या फिर 8 बजे लेना पड़ सकता है। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड एंड
बी इन्फॉर्म्ड ॲज वेल, आणि बाकीच्या तुमच्या मित्रमैत्रिणींना पण सांगायचे की आपल्या क्लासेसमध्ये आहेत त्यांना. ओके, मोस्टली म्हणतोय मी, आय एम नॉट शुअर अबाउट इट. ओके, सो first example is an athlete is running on a circular track. He runs a distance of 400 meters in 25 seconds before returning to his original position. What is his average speed and velocity? So first thing is average speed, second thing is average velocity. See, what is first thing we have given? He runs the distance of 400 meters in 25 seconds. That means we have distance that is 400 meters and time that is 5 seconds. What we have to find out? We have to find out speed. Speed के लिए मैं यहाँ पे s लिख दूंगा. S is not for the displacement. This is for speed. Okay. And velocity के लिए मैं v लिख दूँ. Oh, sorry. Yeah, Virendra. I'm sorry. Very good, thank you. Time is 25 seconds, not 5 seconds. ठीक है, जिन जिन लोगों ने मुझे बताया सब लोगों को थैंक यू. या ओके, so time is how much? 25 seconds. So calculate. चलो एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो. What is the formula for average speed? स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है? Speed is equals to distance by time. Distance is 400. Time is 25 seconds. What will be? What it will be? 400 meters by 25 seconds. 16 meters. Everybody got it? Average speed is 16 meters per second. Now calculate the velocity. Here is very interesting. What is velocity? Average velocity. Read the question again, read the data again, memorize the formula, try to recall it. याद करने की कोशिश करो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, और तब मुझे आंसर देना कि व्हाट इज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. The athlete is running on a circular track. He runs a distance of 400 meters in 25 seconds before returning to his original position. What is his average velocity? Okay, Ayush and Kadambari has given answer as 0 meters per second. How? उस एथलीट ने इतनी दौड़ लगाई 400 मीटर की, वो भी 25 सेकंड में, और आप लोग कह रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी 0 थी, एवरेज वेलोसिटी. ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग निकालिए कुछ तो वैल्यू. Nobody? Okay, fine. See, answer given by Kadambari and Ayush is correct. That is 0 meter per second. Guys, we know that velocity is nothing but displacement divided by total time taken. Displacement divided by total time taken. So what is displacement of that particular athlete in this example? Tell me, what is displacement of that athlete? 0 meters. जहां से उसने शुरू किया वहीं पे वो वापस आ गया ना, बरोबर ना? म्हणजे ज्याने त्या ऍथलीटने जिथून सुरू केलं तो तिथेच परत आला. So displacement is 0 and 0 divided by anything is 0. So average velocity will be 0. Okay, fine. So example second जे आहे, that is for your homework. You can do it as your homework. Example second, example third, example fourth. These three are as your homework. Okay, example second, third and fourth. Even though example तुमच्या सिलेबसला नसेलही, ओके, तुमच्या सिलेबस मधनं एक्सक्लूड ही केलं असेल, still you have to solve it. ओके, बिकॉज तुमच्या एक्झाम खूप लांब आहेत, आपल्याकडे खूप वेळ आहे, आणि खूप वेळ आहे याचा अर्थ असा आहे की आपण जास्तीत जास्त गोष्टी शिकायच्या. राईट? चला ठीक आहे, आता ऑलरेडी तुम्हाला भरपूर लेट झालेला आहे, 10 वाजले, तर मी काय तुम्हाला जास्त जास्त वेळ म्हणजे असं बसून ठेवणार नाहीये. तर तुमचे हे जे 3 एक्झाम्पल्स आहेत ते तुमच्या होमवर्क साठी आहेत. आय होप सगळ्यांचं जेवण झालं असेल. सो नाऊ फॉर टुडे दॅट इज इट फॉर टुडे, अँड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय स्टुडंट्स, टेक केअर. Bye. Everyone can leave the class now. Thank you. Yeah, bye everyone. Bye.
चला सगळ्यांनी क्लास लिव्ह करा. बाय. कादंबरी, वैष्णवी, विशाल, या बाय बाय. चलो चलो, गुड नाईट. नो प्रॉब्लेम. गुड नाईट. आयुष, leave the meeting.